सोशल ओवरहेड्स, पहला है उसका सोशल ओवरहेड्स. Now what are social overheads? I said government spends money for welfare of the society. अभी जैसे कंट्री लाइक इंडिया जो है, यहाँ पे वी फेस प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, तो गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन सोशल वेलफेयर, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम. अभी पिछले कुछ दिनों पहले, थोड़े दिन पहले आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि अपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो एड्रेस टू नेशन पे आए थे. उन्होंने वहां पे बताया था कि नवंबर तक हर महीने रेशनिंग के शॉप से दे विल इशू 5 kgs of rice or 5 kgs of wheat per person per month up to November. Because of this lockdown, many poor people have got affected, and for their welfare, government has come up with this type of program. Then there is social overhead expenditure of the government. Then second one into that we have is human development. Just spare me a minute, I'm checking up some settings. Hello. Human development. We all know that the manpower is one of the most important resource which exists in the factors of production, right? We have 4 factors: land, labor, capital, entrepreneur. Now, of those 4 factors, if we observe, human factor is most important factor. Human factor is most important. तो उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है. Government spends money on health facility, education facility, and medical facilities, etc. are human development expenditure of the government. Then third one we have is rural development. The third type of expenditure what we have is of rural development. Rural development expenditure of the government. Money is spent by the government on the development of rural areas. वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनाना, रोड बनाना, बैंक्स बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रूरल डेवलपमेंट वर्क. Then fourth one we have is infrastructure development. Infrastructure development. That is जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब रोड, ब्रिज, वेयरहाउस, बैंक्स एक्सेट्रा, जहां पे है उसको इम्प्रूव करना.
और नहीं है वहां पे प्रोवाइड करना, आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. फिफ्थ वन, science and technology. The money is spent by government for research and development. आज देखो वर्ल्ड के हर एक कंट्री, वर्ल्ड की हर एक कंट्री जो है वो कोविड-19 के मेडिसिन फाइंड करने पे रिसर्च कर रही है. Then the money spent by government on that is science and technology. At the same time, अगर आप ऑब्जर्व करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लास्ट ईयर मनी स्पेंड किया था. Money was spent by the government on mission Chandrayaan, if you remember, Chandrayaan-2. Chandrayaan-2 मिशन हमने लॉन्च किया था. उसके पहले मंगलयान मिशन था, जिसके ऊपर मूवी भी बना है, मिशन मंगल. So the money spent by government on such activities are science and technology expenditure. Then sixth one is agricultural development. Money is spent by government for development of agricultural sector shall be called as agricultural development expenditure. जैसे construction of dam, construction of canal, etc. are agricultural development expenses. And last one we have is industrial development. Money is spent by government for development of industrial sector. Industrial parks बनाना, industrial road बनाना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाना, ये सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है. यू कैन रिमेंबर दिस पार्ट with a keyword called as Shri Sai, SHRISAI, Shri Sai. Now we go to the fourth type of expenditure. Fourth one we have is non-development expenditure. Non-development expenditure. It refers to the money spent by government not resulting into economic growth and development. मतलब गवर्नमेंट जब खर्चा करेगा बट वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं लाएगा, then that money spent by the government would be called as non-development expenditure. अभी non-development expenditure
तीन टाइप के होते हैं। वन वी हैव इज, फोर होते हैं, फोर टाइप। वन, subsidies. Now, what are subsidies? In fact, I can say subsidies are the concessions given by the government. Subsidies are the concessions given by the government to the people, to the producers, in price of various goods and services. Then those subsidies are called major non-development expenditure of the government. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, one of the very well-known subsidy of the government is gas subsidy. If you remember, गैस सिलेंडर के लिए आप पेमेंट करो, आपको थोड़े दिन के बाद में वही पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, सब्सिडी का पैसा। दैट इज सब्सिडी। दूसरा होता है, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस के सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, etc., etc., shall be called as administrative expenses of the government. Third one, interest payment. See, government borrows money, government loan लेती है, and those loans are not free. उन लोन के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, and the interest so paid by the government shall be called as non-development expenditure. And fourth one we have is defense. आज आप ऑब्जर्व करो, every country witnesses some or the other problem, internal or external problem. तो उनको सॉल्व करने के लिए, अभी जैसे country like India is facing problem of external aggression. एक जगह पे चाइना है, दूसरे जगह पे पाकिस्तान है, तीसरे जगह पे बांग्लादेश, सब परेशान कर रहे हैं। वो एक्सटर्नल एग्रेशन, मगर चाइना में इंटरनल एग्रेशन है। चाइना हैज इंटरनल एग्रेशन, लोग अंदर ही अंदर अभी रिवॉल्ट कर रहे हैं। तो इन सब में से गवर्नमेंट को अपने कंट्री को बचाना है, दैट मनी स्पेंट ऑन दैट आर डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। That money spent would be defense expenditure of the government, and that is one of the major expenditure of the government.
Now, that are development and non-development expenditure, you can remember it as SAID, SAID. Now, we go ahead towards the second last expenditure of the government, plan expenditure. Plan expenditure. It refers to the money spent by government in accordance with the ongoing plan. The money is spent by government in accordance with ongoing plan. गवर्नमेंट देखो कुछ भी चीज करने का रहता है तो प्लानिंग करती है और उस प्लान के हिसाब से जो खर्चा किया जाएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसके अगेंस्ट में लास्ट टाइप का एक्सपेंस है अपना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. It refers to the money spent by government not according to ongoing plan. Which is not in accordance with the plan. Plan के हिसाब से नहीं है, then such money would be called as non-plan expenditure. It's called as non-plan expenditure. ये हो गया 6 types of plan. Now 6 types of expenses. Now we will study one important part called as growth of public expenditure. We will study growth of public expenditure. That we will study one table जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा that during the planning period there is tremendous growth of public expenditure. Here public expenditure in rupees crores. हम सबसे पहले लेते हैं 1950-51. 1950-51 is the period where the planning actually started in India. Planning started in India 1951 में. तो ये एक starting point लेंगे. इस वक्त में गवर्नमेंट का expenditure, total public expenditure was 900 crores. The total public expenditure was 900 crores. फिर हम लेते हैं year 1991-92. 1991 is called as year of reforms. याद रहेगा लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, तो उस ईयर को हम वापस से बेस लेते हैं. 1991-92 में the public expenditure was 72,317 crores. And अभी लेटेस्ट वाला एक ले लेते हैं 2018-19. लेटेस्ट वाला the public expenditure was 17 lakh
29,682 crores। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये टेबल हमको क्लियरली बता रहा है, क्या बता रहा है, that the expenditure of the government is rising, it is increasing, year after year it is increasing। अभी ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, उसके कॉजेस है, उसके रीजंस है। तो वो रीजंस और कॉजेस हम स्टडी करेंगे, मगर अपने अगले लेक्चर में। जो इतना डिस्कस किया है उसके अंदर आपको कुछ डाउट है तो पूछो। ये देखो मैडम, जितने दिन के बाद सब चालू हुआ वापस। और उसके पहले का होता है, मेरे को रेस्टलेस में फील करता ना, ये उसका ये पार्ट है। आदि आज शाम को ये सूझने वाला है, ये कंफर्म। Okay, so I'm concluding up with my session today. Always you have some doubt,